Assalamualaikum. In this lecture, we will study the applied physiology of anterior and posterior pituitary gland. In this slide, we can see here there is anterior pituitary and posterior pituitary, and the hyperactivity of the anterior pituitary will cause gigantism, acromegaly, gigantism, Cushing's disease. And the hypoactivity will cause the dwarfism, acromicria, and Simon disease. And the posterior pituitary will cause the syndrome of inappropriate hypersecretion of ADH. And hypoactivity of the posterior pituitary will cause the diabetes insipidus. Anterior and posterior pituitary will also hypoactivity will cause the dystrophic adipogenitalis. So dystrophia adipogenitalis is basically caused by the hypoactivity of the both anterior and posterior pituitary. Growth hormone. The hypersecretion of the growth hormone will cause the gigantism, acromegaly, and acromegaly gigantism. And the hyposecretion will cause the dwarfism, acromicria, and Simon disease. In the gigantism, we can see it is basically a pituitary disorder which is caused by excessive growth of body. The subject look like giants with average height of about 7 to 8 feet. So in this disease, the height of the body increase up to 7 to 8 feet, and the excessive growth of body is present in this. What are basically the causes of gigantism? Due to the hypersecretion of growth hormone in childhood or pre-adult life, before the fusion of epiphysis of bone with shaft, and the hypersecretion of the growth hormone is because of tumor of the acidophilic cell in the anterior pituitary. We can see here there are different type of cells which are present in the anterior pituitary, and they produce different type of hormones. In the anterior pituitary, there are present the acidophilic cell, the basophilic cell, and the chromophilic cell. When the hematoxylin and eosinophils are seen to these cells, then the acidophilic cell will show the orange red color, and the basophilic cell will show the purple and bluish color. So the chromophilic cell will not ever show any type of hue, any type of stain. Okay. So the acidophilic cell will secrete the will cell or somatotrophs and the necrotrophs, and basophilic cell are the corticotrophs, somatotroph, and thyrotroph. And the acidophilic cell, somatotrophic cell will secrete the growth hormone, and the lectotrophic cell will secrete the prolactin. So growth hormone and prolactin are basically secreted from the acidophilic cell. And the follicle stimulating hormone and luteinizing hormone and TSH is secreted from the basophilic cell. So the gigantism is basically caused, it is basically in the childhood, if the pituitary gland secretes to a high concentration of growth hormone, then this disease will occur. And the causes of this disease is due to the hypersecretion of the growth hormone in the childhood and before the period of epiphysis of bone with the shock. What was the epiphysis? Epiphysis was the ending of the bone,
and this ending of the bone when combined with the shock is completed in the adulthood. So before the adulthood, in the childhood, if the hypersecretion of or if the hypersecretion of growth hormone will occur, it will cause gigantism. And the hypersecretion of the growth hormone is because of tumor of the acidophilic cell. If the acidophilic cell has a tumor of the cells, then this tumor will also cause the anterior pituitary to secrete growth hormone in excess, and this growth hormone will cause gigantism. So in this slide, we see the main two causes of gigantism: the tumor of the acidophilic cell, and when in the childhood, hypersecretion of growth hormone. What are basically the signs and symptoms of the gigantism? The general overgrowth of the person lead to the development of a huge structure with a height of 7 to 8 feet, and the limbs are disproportionately long. Giants are hyperglycemic and they develop glycosuria and pituitary diabetes. Hyperglycemia is basically the concentration of the glucose in the blood will increase in the hyperglycemia. This high concentration causes the stimulation of the beta cell of pancreas, islets of Langerhans in the pancreas, and to release insulin, so that this insulin will decrease the level of glucose in the blood. But what will happen to these cells? These cells will lead to degeneration of these cells because and deficiency of insulin and anti-diabetes mellitus is developed because when hyperglycemia will occur due to the hypersecretion of the growth hormone, it will cause the exhaustion of the islets of Langerhans cell to secrete the insulin. This exhaust cell then will deficient to secrete uh, insulin. When the level of the insulin is decreased in the blood, then the hyperglycemia will occur, and this is basically all this state is also known as pituitary diabetes. Due to the pituitary hormone, glucose level in the blood increase and the insulin level is decreased due to the exhaustion of the cell of the pancreas. So this situation will lead to the pituitary diabetes. And in the gigantism, the pituitary diabetes is more common. Okay. The tumor of the pituitary gland itself causes constant headache, and the pituitary tumor also causes the visual disturbance. Visual disturbance is also known as bitemporal hemianopia. In this diagram, we can see here when we see the mechanism of the vision, the visual cycle, and the visual, we can see there are two parts of the senses of visual senses will reach to the occipital lobe. In this diagram, we can see here there is the nasal and temporal. The nasal part will go as it is, and the temporal part will bisect in the optic chiasma. In the optic chiasma, when this intersects, there is also there the pituitary gland is present. So, if the tumor of the pituitary gland will occur, it will compress this chiasma. So, when this neuron in the optic chiasma, these neurons are compressed and it will affect the temporal vision. Okay. So here is the laser field. When the light will enter into the eye, then the nasal field go as it is, and the temporal will bisect.
and when the temporal feels back to the occipital lobe, it combines. So here it will cause the temporal जो है वो region damage. So there will be the bitemporal hemianopia and the half visual damage will occur here due to the pituitary tumor. So in this slide, we'll study the visual disturbances, and these visual disturbances are due to the pituitary tumor. Okay. इसको मैं आपको इस तरह से जो है वो बता देती हूँ एक दफा कि हमारा जो विजुअल साइकिल होता है वो टेम्पोरल और विजुअल, ठीक है, उसमें रीजन्स होते हैं। अब जब लाइट एंटर करती है तो आई की बैक साइड के ऊपर जो इसका जो विजुअल होता है टेम्पोरल, जो नर्व जो है वो नेजल रीजन को लेके जा रही होती है, तो नेजल रीजन की न्यूरॉन्स जो है वो एज इट इज जाती है, लेकिन जो टेम्पोरल रीजन की न्यूरॉन्स होती हैं वो ऑप्टिक कियास्मा के अंदर जो है वो बाइसेक्ट करती हैं। दैट मीन कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव ऑन करती हैं। राइट की जो है वो लेफ्ट में जाती है और लेफ्ट की जो है वो राइट में जाती है। ठीक है, अब ये जो है वो बाइसेक्शन का एरिया होता है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर पिट्यूटरी का ट्यूमर जो है वो क्रिएट होता है तो वो कंप्रेस कर देता है इस ऑप्टिक कियास्मा को। इस ऑप्टिक कियास्मा की कंप्रेशन की वजह से जो टेम्पोरल रीजन होता है, टेम्पोरल रीजन की जो नर्व्स होती हैं विजुअल साइकिल की, वो अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हाफ विजुअल जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, हमारी जो विजन होती है वो हाफ जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है, लेकिन जो मेजर विजन होता है वो एज इट इज जो है वो रहता है। So in the gigantism, the visual disturbance may also occur due to the pituitary tumors. Second one is the acromegaly. Acromegaly is a disorder which is characterized by the enlargement, thickening, and the broadening of the bone, particularly in the extremities of the bone. So the acromegaly is basically a disease which occurs after the adulthood, hyper जो है वो secretion of growth hormone. ठीक है, adulthood में अगर हमारे पास जो है वो hyper secretion of the growth hormone होती है तो जो डिजीज होगी वो एक्रोमेगेली होगी, और एक्रोमेगेली जो है वो बेसिकली enlargement or the thickness of the जो है वो bones होती है। Basically, the cause of the acromegaly is the growth hormone secretion, hypersecretion of the growth hormone after the fusion of the epiphysis with the shaft of the bone. जब जो एंडिंग ऑफ द बोन होती है जिसे हम एपिफाइसिस कहते हैं वो शाफ्ट के साथ जो है वो मिल जाती है, तो उसके बाद हमारे पास जो सिक्वेशन होती है ग्रोथ हार्मोन की वो एक्रोमेगेली को कॉज करती है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द ट्यूमर ऑफ द एसिडोफिलिक सेल इन द एंटीरियर पिट्यूटरी। जो एसिडोफिलिक सेल थे वो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे थे, तो अगर एसिडोफिलिक सेल्स के अंदर ट्यूमर जो है वो क्रिएट हो जाता है तो वो भी हमारी एक्रोमेगेली की जो है वो कॉज करता है। तो अगर हम gigantism में और एक्रोमेगेली के दरमियान में डिफरेंस देखेंगे तो जो gigantism है वो चाइल्डहुड में हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है, जबकि जो एक्रोमेगेली है वो अडल्टहुड में जो है वो हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है। After this, we can see here in this slide the sign and symptoms of the acromegaly is the face with a rough featured protrusion of the supraorbital region, broadening of the nose, thickening of the lips, thickening and the wrinkle formation on the forehead, and prognathism. Prognathism is basically the protrusion of the lower jaw. Protrusion होता है लोअर जॉ का आगे की तरफ जो है मूव कर जाना। बेसिकली इन द नॉर्मल वे में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो अपर जॉ है वो फ्रंट में होता है और जो लोअर जॉ है वो बैक में होता है। मतलब अगर हम नॉर्मल अक्लूजन को देखते हैं, अगर हम नॉर्मल जो है वो अपने माउथ की पोजीशन को देखते हैं इन नॉर्मल स्टेट, अगर आप अपने मुंह को जो है वो बंद करके देखेंगे तो हमारा जो अपर जॉ है वो बाहर की तरफ और लोअर जो है वो अंदर की तरफ होता है। लेकिन जो एक्रोमेगेली की सिचुएशन होगी उसमें लोअर जॉ जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगी, ग्रोथ ऑफ द बोन हो जाएगी, थिकनिंग ऑफ द बोन हो जाएगी। ठीक, और इसके बाद हमारे पास इनलार्जमेंट होता है हैंड्स है, फीट है और काइफोसिस है। Kyphosis is basically a state in which the spinal cord abnormality will occur, and the shape of the spinal cord is disturbed, and the back of
The upper part of the spinal cord is more long than the lower part. We can say it in the kyphosis. तो जो गाइकोसिस की सिचुएशन है वो भी एक्रोमेगाली के अंदर हो जाएगी। इसके अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो डिस्टर्बेंस होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी जो शेप है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। जो शेप में डिस्टर्बेंस होता है वो क्या होता है कि जो अपर पार्ट होता है वो मोर डोम लाइक होता है और जो लोअर होता है वो मोर जो है वो इनसाइड जो है वो मूव कर जाता है। तो ये जो डिस्टर्बेंस है वो डिस्टर्बेंस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का है और ये क्या करते हैं एक्रोमेगाली की सिचुएशन में स्पाइनल कॉर्ड के डिस्टर्बेंस को कहते हैं। उसके बाद हम सेकंड एक्रोमेगाली में कितनी जो है वो स्कैल्पल होते हैं। Overgrowth of the body hair, enlargement of the visceral organs, which include lungs, thymus, heart, liver, and spleen, and the hyperactivity of thyroid, parathyroid, and adrenal gland, and hyperglycemia and glycosuria resulting in diabetes mellitus, hypertension, and headache, visual disturbance, bitemporal hemorrhage. Bitemporal hemorrhage is also present in the acromegaly, but we can study here the gigantism and the acromegaly have to some extent same sign and symptoms, but the gigantism in the jaw, gigantism will occur in the childhood, hypersecretion of the growth hormone, and acromegaly will occur in the adulthood. Gigantism will cause an enlargement, and acromegaly will cause a thickening. We can also see in this diagram there is a supraorbital average protrusion। प्रोट्रूजन का मतलब है बाहर की तरफ आना, ठीक है। तो जो सुप्रा ऑर्बिटल नॉच होती है हमारी जिसके अंदर हमारा आई बॉल जो है वो स्टैंड कर रहा होता है, तो वो जो बोन है वो जो रिच है उसकी थिकनिंग हो गई है जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया सुप्रा ऑर्बिटल जो है वो प्रोट्रूजन हो गई है। We can also see here there is the broadening of nose, thickening of lips, and the protrusion of the lower jaw. The wrinkled of the forehead is also जो है वो present. Okay. There is also the difference between the normal and the acromegaly to have place. Increased parental bulging, growth, furor, enlargement of the base of the nose, thickening of the nasal labia, thickening of the lip protrusion, and hypertrophy, and worsening of the prognosis. That means that the lower jaw will move forward, okay, in the prognosis. Then the upper jaw. Okay. Acromegaly gigantism is the third one of a hypersecretion of the growth hormone secretion. Before and after. Okay, it is a rare disease which is both gigantism and acromegaly combination. Hypersecretion of the growth hormone in the children before the fusion of the epiphysis with the shaft of the bone causes gigantism, and if the hypersecretion of the growth hormone is caused even after the fusion of the epiphysis, the symptoms of acromegaly will appear, and then their combined system is known as the acromegaly gigantism. Now in this slide we can see the hyposecretion of the growth hormone. The hyposecretion will cause the divorce symptom. The pituitary disorder in the children which is caused by stunted growth. That means the deficiency in the growth. We can see also in the diagram the normal person and the divorce जो है वो patient. What are basically the causes of dwarfism? Reduction in the growth hormone secretion in infancy or early childhood. It's because of the reason the tumor of the chromophore cell, deficiency of the growth hormone or releasing hormone, deficiency of the somatostatin C, and atrophy or degeneration of the acidophilic cell in the anterior pituitary. So, हमें पता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है उनकी secretion की deficiency हो गई है, तो वो किस तरह से deficiency हुई है? हमें पता था कि जो सेल्स एसिडोफिलिक है वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्रोमोफोर के सेल्स भी जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होते हैं। अगर क्रोमोफोर की सेल का जो है वो ट्यूमर जनरेट हो जाता है तो वो एसिडोफिलिक सेल को क्या कर देगा, कंप्रोमाइज कर देगा, ठीक है, वो उनको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी।
So, what are the causes of the dwarfism? The tumor of the chromophore cells, which destroy the normal cells secreting growth hormone. So, deficiency of the growth hormone releasing hormone, which is secreted from the hypothalamus. Hypothalamus also secrete the growth hormone releasing factor, which act on the anterior pituitary and secrete the growth hormone. So, if the releasing factor is removed from the hypothalamus, then there will be the hyposecretion of the growth hormone. Deficiency of the somatomedian C. Somatomedian C, somatomedian C को हम already भी study कर चुके हैं. These are basically insulin like growth factor. जब growth hormone जो है वो एक्ट करता है लिवर के ऊपर, तो वहाँ से जो है सोमेटोमीडियन सी जो है सीक्रेट हो रहे होते हैं. ये सोमेटोमीडियन सी जो है वो प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं, जो कि ब्लड के अंदर जो है वो मूव कर रही होती है. और फिर ये सोमेटोमीडियन सी जो है ये ब्लड के साथ जो प्रोटीन के साथ मिलते हैं, तो स्लोली स्लोली जो है ये इनका टाइम पीरियड जो कि 20 हाफ लाइफ था वो 120 में कन्वर्ट हो गया था. अब जिन प्रोटीन के साथ ये कंबाइन करते हैं वो इनको क्या करती है, स्लोली स्लोली जो है वो सीक्रेट करती है. जब ये स्लोली सीक्रेट करती हैं तो हमने देखा था कि बोन और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के लिए ग्रोथ हार्मोन सोमेटोमीडियन सी के साथ जो है वो कंबाइन करता है, और सोमेटोमीडियन सी के साथ जो है वो कंबाइन करके इनडायरेक्टली जो है वो इसकी ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा होता है. अब हमारे पास जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ सोमेटोमीडियन सी है, वो किसी भी वजह से हो सकती है कि ग्रोथ हार्मोन जो कि लिवर के ऊपर एक्ट करके सोमेटोमीडियन सी को सीक्रेट कर रहे थे वो डैमेज हो गए हैं या वो उस तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास क्या होगा, डिवॉर्फिज्म जो है वो असर कर सकता है. एट्रोफी और डिजनरेशन ऑफ द एसिडोफिलिक सेल इन द एंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, जब एट्रोफी हो गई है, एट्रोफी हो गई है एसिडोफिलिक सेल की जिन्होंने ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट किया था. So in this slide, we will study the four features and four causes of the dwarfism. The tubules of the chromophore cell, which compress the acidophilic cell, and the destruction of the cell will cause the deficiency in the secretion of the growth hormone. Then second will be the deficiency of the growth hormone releasing hormone from the hypothalamus. The third will be the deficiency of the somatomedian C, which is secreted from the liver when the growth hormone will act on the liver, and this deficiency may be due to the liver damage and will be other factors. Atrophy or degeneration of the acidophilic cell in the anterior pituitary. The acidophilic cell in the anterior pituitary may be damaged. Hyperpituitarism is also in the dwarfism. Reduction in the secretion of the R hormones of the anterior pituitary. If the R hormone of the anterior pituitary is secretion is restricted, then there is panhypopituitarism. This type of dwarfism is created, and in this the dwarfism is also occur, and this type of dwarfism is associated with other symptoms due to deficiency of other anterior pituitary hormones. तो हम इस में जो है वो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से डिवॉर्फिज्म को जो है वो डिस्कस कर रहे थे. तो डिवॉर्फिज्म की एक और कॉज जो है वो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की हो सकता है, जिसके अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो अफेक्ट हो जाती है. तो इस डिवॉर्फिज्म के ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ जैसे ही अदर हार्मोन की जो है वो पिट्यूटरी के अदर हार्मोन के अफेक्ट हुए हैं, तो उनके भी फाइनल सिम्टम जो है वो डिवॉर्स के साथ जो है वो शो होना लग जाएंगे. Then the final symptom of the dwarfism of the panhypopituitarism is the primary symptom of the hypopituitarism is stunted skeletal growth. Okay, in the previous time now we will study the dwarfism definition. Then what are the causes of the dwarfism. Then in this time now we will study the signs and symptoms of the dwarfism. So stunted skeletal growth होगी, deficient in skeletal growth होगी. Maximum height of anterior pituitary dwarf patient will be 3 feet. Proportion of different parts of the body are almost normal. Only the head becomes slightly larger in relation to the body. Okay, pituitary dwarfism do not show any deformity, and their mental activity is normal with no mental retardation. तो अब इन पिट्यूटरी डिवॉर्फिज्म के अंदर हमने देखा है कि इसके अंदर ना ही मेंटल रिटार्डेशन हो रही है, क्योंकि इसमें जो हेड है वो नॉर्मल है. ठीक है, लेकिन जो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो थोड़े से क्या हुए हैं, स्टडीड हो गए हैं, डेफिशिएंट इन ग्रोथ हो गई है उनमें.
इसके बाद वो कहते हैं कि तो मेंटल जो है वो एक्टिविटी जो है वो ऐसे पेशेंट की क्या होगी, नॉर्मल होगी। इसी के साथ इनके रिप्रोडक्टिव जो है वो फंक्शन भी नॉर्मल हो सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अगर मैन हाइपोथायरायडिज्म द डिफॉर्म डॉट ऑब्टेन प्यूबर्टी ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द मोनेटिक ऑफ द हार्मोन। ओके, अगर वो डिफॉर्म जो है डिवॉर्म डिफॉर्म अगर डिमॉर्फिज्म जो है वो सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की वजह से हुई है, तो उस ग्रोथ हार्मोन की वजह से अगर डिमॉर्फिज्म हो गई है, तो उससे मेंटल और रिप्रोडक्टिव हार्मोन नॉर्मल रहेंगे। लेकिन अगर वो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से डिमॉर्फिज्म हो गई है कि उसमें ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ अदर हार्मोन की इफेक्ट हो गए हैं, तो इसकी वजह से जो हमारे पास डिमॉर्फिज्म होगी उसमें हमारा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी इफेक्ट होता है, जिसमें जाके फर्दर जो है वो गोनेड्स एक्ट करना होता है। तो जो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से डिवॉर्फिज्म है, उसमें जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वो भी अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉन डिवॉर्फिज्म genetic disorder, also called the growth hormone insensitivity. Lord dwarfism के अंदर मोस्टली जो रिसेप्टर्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन के, वो मोस्टली डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, वो ड्यू टू द म्यूटेशन इन जीन की वजह से भी हो सकते हैं। तो उनकी जितने भी ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं, वो उनको ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन तो नो डाउट नॉर्मल है, लेकिन रिसेप्टर नॉर्मल रिसेप्टर ना होने की वजह से, रिसेप्टर के साथ जो है वो अटैचमेंट ना होने की वजह से ग्रोथ हार्मोन अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से जो डिवॉर्फिज्म होती है, दैट विल बी नॉन डिवॉर्फिज्म। Another type of dimorphism is the psychogenic dimorphism, in which the short stature is because of the deficiency of the growth hormone and the extreme emotional deprivation or stress. Okay, if there is extreme emotional depression here or stress there, so the anterior pituitary will be depressed, and the growth hormone secretion will be deficient, and this type of dimorphism is known as the psychogenic dimorphism, and psychological dimorphism और स्ट्रेस डिवॉर्फिज्म। स्ट्रेस की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो मोस्टली इफेक्ट हुई है, और उसकी वजह से जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन हुई है, और उस ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से डिवॉर्फिज्म हो गया। ओके, डिवॉर्फिज्म इन डिस्ट्रॉफिक एडिपोज जेनिटलिस, it is also known as Froehlich syndrome. It is a condition in which may be caused by decreased level in the growth hormone releasing hormone in the blood. It is characterized by growth hormone redoundation, growth hormone sexual determinants, atrophy, or hypoplasia of gonads, and already secondary sexual disorder. तो अगर हम इसमें देखते हैं जो एडिपोज जेनिटलिस की वजह से अगर हम देखते हैं, एडिपोज जो है वो फैट का बेसिकली टिश्यू होता है, और जेनिटलिस जो है वो गोनैड से रिलेट कर रहे होते हैं। दैट मीन के जो पर्सन है वो फैटी है, ठीक है, उसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन फैट के फंक्शन को फॉर्म करा था वो नहीं कर सकता, और बेसिकली ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से जो है वो होता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इन द ब्लड। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो मोस्टली हाइपोथैलेमस से जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें जो है वो क्या हो गया है, ग्रोथ की रिटॉर्डेशन हो गई है। ये ग्रोथ की रिटॉर्डेशन जो है वो जेनिटल सेक्सुअल जो है वो ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही है, साथ में जो है ये फैटी मतलब जो फैट्स हैं उसकी मेटाबॉलिज्म को भी जो है वो इफेक्ट कर रही है। तो इस टाइप के जो डिवॉर्फिज्म है इसको हम क्या कहते हैं, एडिपोज जेनिटलिस डिस्ट्रोफिया एडिपोज जेनिटलिस। Dimorphism in the panhypopituitarism. Panhypopituitarism, okay, panhypopituitarism we already जो है वो discussed in the panhypopituitarism. We already have discussed in the previous diagram, okay, in which the all the secretion of the
anterior pituitary is disturbed. Okay. The first one, the hyposecretion of the growth hormone was dwarfism, in which the stature is extended stature is present. The second one is the acromicria. Acromicria is a rare disease in the adult which is characterized by the atrophy of the extremities of the body. We can also understand this diagram. What are basically the causes of the acromicria is the deficiency of the growth hormone in the adult, and the secretion of the growth hormone decreases in the morning condition. Deficiency of the growth hormone releasing hormone from the hypothalamus, atrophy and degeneration of the acidophilic cell, tumors of the chromophoric cell, and the pan-hypopituitary cell. So, atrophy and the thinning of the extremities of the body mostly associated with the hypothyroidism. Hyposecretion of adrenocorticotropic hormone also is common in hypomicria, and the person becomes lethargic and obese. There is loss of sexual function. तो इन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्रोमाइक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो एक्रोमाइक्रिया जो है वो बेसिकली अडल्टहुड में जो है वो डेफिशिएंसी इन द ग्रोथ हार्मोन हो रही होती है, ठीक है। और ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो किसी भी वजह से हो सकती है, हाइपोथैलेमस की डैमेज की वजह से, एसिटिक सेल की डैमेज की वजह से, ट्यूमर्स और क्रोमोफोबिक सेल की वजह से। इसके साइन एंड सिम्टम्स में हमने देखा कि जो एक्सट्रीमिटीज थी वो थिन होने लग जाती हैं, और मोस्टली जो है वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी जो है उसके साथ जो है वो अटैच होने लग जाता है, उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है, और द पर्सन बिकम्स जो है वो ओबेस, ठीक, एंड देयर इज लॉस ऑफ द सेक्सुअल फंक्शन ऑल्सो. Simon disease. The third one is the hyposecretion of the growth hormone. The Simon disease, a disease is described by the destruction of the psychological exhaustion of the cells of the anterior pituitary. A rare pituitary disease and it is also known as pituitary ganosia. Simon disease occurs in the pan-hypopituitarism and the hyposecretion pan-hypopituitarism, in which all the secretion of the anterior pituitary is decreased. Hyposecretion of all the anterior pituitary hormones due to atrophy or degeneration of anterior pituitary. Simon disease, if we study the signs and symptoms of the Simon disease, the person, if young, it will look like old. So, it is a senile disease. A 30-year-old person look like a 60-year-old person. The senile disease is mainly due to deficiency of the hormone from the target gland of anterior pituitary, the thyroid gland, adrenal cortex, and gonad. The loss of hair over the body and also loss of teeth. Skin on the forehead becomes dry and wrinkled, so there is shrunken appearance of the facial features. Okay, there is also a given a case scenario. We can study in the previous lecture divorce reason, acromicria, Simon disease, and then there is Simon disease sign and symptoms. But there is case scenario. A middle-aged male patient consulted his family physician because he has noticed that his head and wedding ring are tight and his shoe size has increased one size during the past couple of years. He complained of joint aches and pain. He also stated he has noticed his voice getting deeper and his facial features being thicker and false when compared to his picture of the 10 year ago. एक पेशेंट है जो कि इस चीज की कंप्लेन कर रहा है, a middle aged male patient consults his family physician. ठीक है, एक मिडिल एज जो है वो मेल पेशेंट है, वो इस चीज की जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि उसके जो शू का साइज है और उसकी जो वेडिंग रिंग का साइज है वो इंक्रीज कर गया है पास्ट 10 years के फीचर्स को वो कंपेयर करता है, उसके जो ज्वाइंट है उसमें भी पेन स्टार्ट हो गया है और जो साइज है वो इंक्रीज कर गया है और उसकी वॉइस की जो है वो गेटिंग डीपर हो रही है. तो व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन इट विल बी, दैट इज द केस सिनेरियो, and this scenario it should be you know told by all of you. And the laboratory if we
Given the laboratory values will show increase the growth hormone IGF-1 level and great MRI reveals are tumor growth levels in the pituitary. So, what is your most probable diagnosis and the precise evidence to support your diagnosis, and what are the lab investigation that you might order to confirm your diagnosis? So, these are all the questions for this case scenario, and you will have to solve and submit your assignment to it. Okay, and the next is the applied physiology of the posterior pituitary. We already know the posterior pituitary will secrete the ADH and the oxytocin. In this, as we study the growth hormone, and in the posterior pituitary, we study the oxytocin and ADH. The applied physiology of the ADH is the hypersecretion syndrome of inappropriate hypersecretion of antidiuretic hormone. ठीक है, and the hypersecretion will cause the diabetes insipidus. So, syndrome of inappropriate storm of inappropriate of the hypersecretion of the antidiuretic hormone is a disease which is characterized by loss of sodium through the urine due to the hypersecretion of ADH. हमें पता है what are basically the function of the ADH, retention और reabsorption of water. अब अगर उसकी सिक्रीशन ही इनअप्रोप्रिएट हो रही है तो वो रिटेंशन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो नहीं अक्सर होगी, बल्कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हाईली अक्सर होगी. ठीक है, क्योंकि सिंड्रोम ऑफ इंक्रीज जो है वो हाइपर सिक्रीशन ऑफ inappropriate hypersecretion of ADH will cause the increase in the secretion of ADH, and this ADH then will act on the kidney, and on the kidney this ADH will cause the reabsorption of जो है वो water. हमें पता है कि एडीएच रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर चला रहा था, तो हाइपरसिक्रेशन ऑफ एडीएच में क्या होगा, इंक्रीज जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी. और ये किसकी वजह से हो सकती है, ट्यूमर सेल और कैंसर सेल की वजह से हो सकती है. और इसमें जो साइन एंड सिम्टम है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, वेट लॉस, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, मसल वीकनेस, फटीग, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी. These are all the signs and symptoms of this disease. Then second is the diabetes insipidus. Diabetes insipidus. अब इस disease के अंदर क्या होगा? This is hyposecretion of ADH. Then the hyposecretion of the ADH, then there will be excessive flow through the kidney and less reabsorption of water through the kidney. What are the causes of the diabetes insipidus? This disorder develops due to deficiency of ADH, lesion or degeneration of the supraoptic or the paraventricular nuclei of the hypothalamus. Supraoptic and paraventricular nuclei basically produce the ADH in the hypothalamus, and if these are disturbed and destroyed, then the higher secretion of then the secretion of the ADH will be less. And the lesion in the hypothalamo-hypophyseal tract and hypothalamo-hypophyseal tract, we also study the hypothalamus secretes their secretion through the blood circulatory system into the adult and other capillary bed which lie in the posterior pituitary. And inability to the renal tubule to give the response to the ADH hormone. The receptors which are present in the renal tubule may be damaged. And atrophy of the posterior pituitary also cause the diabetes insipidus. What are basically the sign and symptoms? The sign and symptoms is the polyuria, polydipsia, and dehydration. Polyuria, excessive large quantity of dilute urine because less reabsorption of water. Polydipsia, intake of excess water is called polydipsia. When there is loss of excess water, the excess to वाटर इनटेक डिजायर विल इंक्रीज. तो ऐसे पेशेंट्स को ज्यादा जो है वो प्यास लगेगी, वो बार बार क्या करेंगे, पोलीडिप्सिया में पानी पिएंगे. पोलीयूरिया में क्या हुआ, एक्सेसिव लोअर ऑफ वो वाटर. उसके बाद डिहाइड्रेशन. इन सम केसेस अगर हमारा थर्स्ट का लेवल नहीं होता तो वो जो पोलीडिप्सिया है और पोलीयूरिया है तो वो डिहाइड्रेशन की तरफ जो है लेके जाती है. बॉडी के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो लूज. In this diagram, we can see the normal patient which should have a gland in the secrete the ADH, it will act on the adrenal ADH secreted,
and it will act on the kidney and reabsorb water. But in the central insidious में क्या हो गया, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही जो है वो हार्मोन सिक्रेट नहीं हो रहा तो वो किडनी के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, तो इंक्रीज जो है वो यूरिन जो है वो एक्सेसिव जो है वो यूरिन होगा, पोलीयूरिया यहाँ पे अक्सर करेगा, और जो है वो पोलीयूरिया क्या करेगा, एक्सेसिव यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मल जो है वो यूरिन की प्रोडक्शन होती है। जब एक्सेसिव यूरिन होगा दैट मीन लॉस ऑफ वाटर हो गया फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ जो है वो मूव ऑन करेगी। So in this slide, in this lecture, we study, we can study the applied physiology of the posterior pituitary, and the anterior pituitary will cause the gigantism, acromegaly, acromegaly kidney lesion, and the Cushing disease is also, and the hypoactivity will cause the dwarfism, acromeglia, and Simon disease, and the posterior pituitary will cause the ADH, hypersecretion, and diabetes in children, and anterior and the posterior pituitary will cause the dystrophic adipose genitalis. So we totally have studied these gigantism, acromegaly, gigantism, acromegaly, and then acromegaly gigantism, and then hypersecretion may be called and dimorphism to hematitis, acromicria, and Simon disease, and Simon disease will basically due to the exhaustion of the cells of the anterior pituitary. Okay, then there will be the case scenario, and then we study the ADH, uh, um, hypersecretion of the ADH and the hypersecretion of the ADH, syndrome of inappropriate hypersecretion of ADH, antidiuretic hormone, and diabetes in children. These are all you have studied in this lecture. Hopefully, you all you have understand the lecture. ओके गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंड हो गया। इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट जो टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।